Now next topic is air pressure. Atmospheric pressure can be defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. Now student, what is air pressure? Air pressure means what? How the air is weight, means air कैसा है वेट में, उस प्रेशर के वजह से जो भी एटमोस्फेयर में या यू कैन से कि टेम्परेचर में डिफरेंसेस होते हैं, सो दैट इज द एयर प्रेशर. Air exerts pressure on all objects on the earth. This is because air above us exerts pressure on the lower layers. However, we don't feel this pressure because air passes from all directions and our bodies to counter this pressure. हमें ये प्रेशर, हमें ये हैवीनेस जो एयर का होता है वो क्यों एक्सपीरियंस नहीं होता है? बिकॉज हम जहाँ पे भी wherever we are, air is coming from all the directions and because of that we are not able to feel that pressure. Somehow if we can say कि अगर कोई strong wind आता है, कोई एक ही डायरेक्शन से आता है तो but of course अगर वो forcefully air blow हो रही है, forcefully strongly air blow हो रही है कोई एक डायरेक्शन में, so we are going to experience that. but अगर हर एक डायरेक्शन से सेम प्रेशर में एयर अगर आएगा, स्ट्राइक होगा हमसे, तो वो हमें फील नहीं होगा कंपेरेटिवली जितना वन साइड से होता है. Atmospheric pressure is measured by the instrument called barometer and the unit by which it is measured, it is known as millibar. Now very much important is air pressure like temperature is not uniform everywhere. It is influenced by the altitude of a place. It is highest at the sea level and decreases with increasing heights. Now here is vice versa. जितना भी लोअर लेवल होगा वहां पे एयर प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा. और जैसे ही आप हाइट पे जाओगे एयर प्रेशर कम हो जाएगा. Where temperature is high, air is hot. The temperature at any place also affects its pressure condition. Where temperature is high, air is hot and it expands and rises, creating a low pressure. But where temperature are low, air pressure is high. Atmospheric pressure is also influenced by the rotation of the earth and the movement of air always take place from high pressure areas to low pressure areas. Now we are going to learn about wind. Air in motion is called wind. Air जब move होता है तो वो motion को हम क्या बोलेंगे? Wind. Difference in atmospheric pressure helps wind to blow. Wind direction is measured by an instrument known as wind vane. You can see here the picture of wind vane and its speed is measured by anemometer. मतलब कि कौन से डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है तो विंड की डायरेक्शन मेजर करने के लिए विंड वैन होता है और कितनी स्पीड से ब्लो हो रहा है स्पीड मेजर करने के लिए एनेमोमीटर होता है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स. फर्स्ट इज परमानेंट विंड्स, second is seasonal winds and third is local winds. What are permanent winds? Permanent winds are also known as planetary winds. These are winds which constantly blow in a particular direction throughout the year. मतलब कि throughout the year अगर wind एक same direction में blow होती है तो it is known as permanent wind. Winds which blow from subtropical high pressure belts to equatorial low pressure belts are called trade winds. मतलब कि ट्रॉपिकल एरिया से जब इक्वेटोरियल एरिया के साइड क्या होता है विंड ब्लो होती है तो इट इज नोन एज ट्रेड विंड्स. Wind originating from subtropical high pressure belts and blowing towards subpolar. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? ट्रेड विंड्स किसे बोलते हैं? तो वो ट्रॉपिकल एरिया से इक्वेटोरियल एरिया के साइड मूव होता है तो दैट इज ट्रेड विंड. बट व्हेन विंड मूव फ्रॉम ट्रॉपिकल एरियाज टू पोलर एरियाज, जो पोलर साइड पे एरियाज होता है वहां पे ब्लो होती है तो दैट विंड्स इज नोन एज वेस्टर्लीज. Winds that blow from polar to high pressure belt to the subpolar low pressure belt. मतलब यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट? व्हाट आर पोलर विंड्स? तो जो पोलर रीजन में ही है हाई से
लो एरिया में ब्लो होती है, बट इन विच रीजन्स? इन पोलर रीजन्स ओनली, सो इट इज नोन एज पोलर winds. The winds blow in both northern and southern hemisphere. Now see student, you can experience or you can understand this wind direction very greatly by this diagram. First we are going to see the inside. Wind plays a very important role in our life. It forms and carries cloud, influences air, oceanic transport and communication. It also contains a form of energy called kinetic energy. Wind से जो energy create किया जाता है, it is known as kinetic energy. Now everyone please pay attention in this particular diagram. You can see that equatorial line. Now equatorial regions, torrid zone. These were known as tropical zone and this is polar regions, right? Now see what we learn. Trade winds किसे बोलते हैं? Planetary wind का ये diagram है. Permanent winds, we also told them permanent winds. Now see what we learn. There are three types of winds. First is trade wind, westerlies and polar winds. So you can see these three winds here very easily. See tropical areas है ये. तो ये जो लाइन्स है, अभी ये टॉरिड जोन है, राइट? इक्वेटोरियल के अराउंड एरियाज को हम टॉरिड बोलेंगे. तो टॉरिड में ये क्या है? हाई लेवल एंड दिस इज दी लो लेवल. सेम वे हाई लेवल, लो लेवल. ओके, नाउ सी व्हाट इज वी आर लर्निंग इन ट्रेड विंड्स कि वो कहां से कहां ब्लो होते हैं. तो ट्रॉपिकल एरिया के लोअर साइड से वो इक्वेटोरियल की साइड ब्लो होते हैं. तो देखो आपको एरोज वैसे ही है. ट्रॉपिकल से वो कहां पे ब्लो हो रहा है? ट्रॉपिकल से वो कहां पे ब्लो हो रहा है? इक्वेटर के साइड. सेम यहाँ पे भी वैसा ही है. ट्रॉपिकल से वो कहां पे ब्लो हो रहे हैं? इक्वेटोरियल साइड. दैट्स व्हाई दे वर नोन एज सी ट्रेड विंड्स. ओके, नाउ साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट मीन्स वॉट? तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर है. तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट साइड से जो विंड्स ब्लो होती है दे वर नोन एज नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इज साउथ डायरेक्शन में ईस्ट वे में से जो ब्लो होती है दे वर साउथ ईस्ट. बट ट्रेड विंड्स किसे बोलते हैं? जो ट्रॉपिकल से इक्वेटोरियल के साइड ब्लो होते हैं. नाउ सेकेंड इज वेस्टर्लीज. व्हाट आर वेस्टर्लीज स्टूडेंट? तो वेस्टर्ली में हमने क्या पढ़ा कि ट्रॉपिकल रीजन के लोअर एरिया से वो ट्रॉपिकल के कौन से साइड? पोलर के साइड वो ब्लो होती है. सी देखो ये विंड कैसे है? तो ट्रॉपिकल एरिया में है. दिस वर ट्रॉपिकल एरियाज और ट्रॉपिकल एरिया में से देखो वो कहां पे जा रही है? पोलर रीजन्स के साइड सारे विंड्स जा रहे हैं. सेम वे में यहाँ पे भी पोलर रीजन के साइड सारे वेव्स आ रहे हैं. और आप देखोगे तो वो वेव्स कहां से, वो विंड्स कहां से ब्लो हो रही है? तो वेस्ट साइड से. दिस इज वेस्ट साइड एंड दिस इज वेस्ट साइड एंड दिस इज ईस्ट साइड. तो देखो वेस्ट साइड से सारे विंड्स ब्लो हो रहे हैं और यहाँ पे भी वेस्ट साइड से ही ब्लो हो रहे हैं. दैट्स व्हाई दे वर नोन एज वेस्टर्लीज. वेस्टर्लीज. ओके, नाउ व्हाट आर पोलर विंड्स? तो पोलर विंड्स हम किसे बोलेंगे कि पोलर एरियाज में ही है. देखो पोलर्स में से ही वो पोलर के और ब्लो हो रही है. सेम वे में साउथर्न पोल में भी है तो दे वर नोन एज पोलर एस्ट्रोलीज. और यू कैन से देखो ईस्ट साइड से ब्लो हो रही है. दैट्स व्हाई दे वर नोन एज पोलर एस्ट्रोलीज. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम because it is very much important. Now second is seasonal winds or a periodic winds. Now these are the winds which change their direction in different seasons during the year. The name only suggests us or name only tell us the meaning of that particular. They blow during a specific season. The monsoon winds in India blow during a particular season, that is June to September, and bring rain to the whole country. They change their direction with the change of season. जैसे ही सीजन चेंज होगा विंड्स अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे. नाउ लोकल विंड्स blowing only during a particular period of a day or a year. These winds have some specific characteristics and blow over a small area. लोकल विंड कैसे कहते हैं? तो पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लो होती है तो उसे लोकल विंड्स बोलेंगे. जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीज, दे वर नोन एज लोकल नेम्स. एग्जाम्पल लू. अगर समर में ज्यादा हॉटनेस होती है
और एकदम गरम गरम हवा जो ब्लो होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, राइट. सो दे वर ऑल नोन एज लोकल नेम्स which are hot and dry local winds blowing in northern India in summer season. Sea winds are also called local winds, which develop due to differential heat of land and sea in the coastal area, that is land and sea breeze. Cyclones and anticyclones are variable winds. Even cyclone हमें पता है कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर में जब विंड ब्लो होती है तो उसे हम साइक्लोन बोलते हैं, राइट. और एंटी क्लॉकवाइज जब विंड ब्लो होती है कहाँ पे, तो सी में, तो दैट इज एंटी साइक्लोन. You can see here a cyclone is an area of low pressure surrounded by high pressure. लो प्रेशर कहाँ पे होता है एयर का, तो लैंड वाले एरियाज में. और हाई प्रेशर एयर का कहाँ पे होता है, तो सी वाले एरियाज में, राइट. तो जब पर्टिकुलर विंड का डायरेक्शन जो होता है सर्कुलर, वो लैंड से होके वो कहाँ पे जाता है, सी टूवर्ड्स जाता है, तो इट इज नोन एज साइक्लोन. और उसका पूरा उल्टा क्या होता है, यू कैन सी हियर, देखो, एन एंटी साइक्लोन इज अ हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय लो प्रेशर. हाई प्रेशर मतलब कि सी टूवर्ड्स से कोई फास्ट ब्लोइंग विंड लैंड टूवर्ड्स जाता है, तो दैट इज एंटी साइक्लोन. They are accompanied by heavy rains and cause immense damage. And these were gentle winds blow out in all directions from the center. They bring fine weather and clear skies. Cyclones are common in tropical regions and are called by different names in different countries. Cyclones different country में different names से उसे बुलाया जाता है. Now, moisture or humidity. Water vapor is an important part of the atmosphere. Its presence in the air determines the moisture content and is called humidity. जितना भी moisture atmosphere में available होता है उसे हम क्या बोलेंगे, humidity बोलेंगे. The humidity level varies from place to place and time to time depending upon the temperature conditions. When the pressure of water vapor in the air is more, the humidity level is high. This is directly linked to the temperature condition. If the temperature is high, the rate of evaporation will be high and so will be the humidity factor. अभी यहाँ पे कैसा है, तो सेम है. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर एवोपरेशन प्रोसेस ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना पानी क्या होगा, तो एवोपरेशन प्रोसेस उसकी ज्यादा होगी. तो जितना एवोपरेशन ज्यादा होगा उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी. सो इट इज लाइक सेम. अगर टेम्परेचर कम है तो एवोपरेशन कम होगा, तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी. In case of low temperature, the capacity of air to hold moisture will be less and therefore the humidity level will be low. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब पूरा दिन foggy day होता है, जब fog हमें ज्यादा देखने को मिलता है winter season में, तो what we can say, humid day. This instrument used to measure humidity is called hydrometer. You can see the picture over here, the hydrometer. Now we are going to learn about some points that concerned with the humidity. First is dew point. What is dew point? At a given temperature, the capacity of air to hold moisture is limited. When the air holds maximum water vapor, it is called saturated. Saturated मतलब क्या, तो जब बहुत ही ज्यादा कोई चीज सोख हो जाती है, जैसे कि हम अगर a bucket is there full of water and we are pouring some clothes in it, तो वो क्या करते हैं, clothes water को सोख कर लेते हैं, right? So that soaking process is very high जब वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी. The temperature at which air gets saturated मतलब कि जिस टेम्परेचर पे एयर क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को सोक कर लेती है, that is known as dew point. Now clouds. As the temperature of saturated air falls, the water vapor in it condense forming droplets of water. We all know that droplets of water means what, जब evaporation process होता है तो ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है और वो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे राइज होके, मतलब ह्यूमिडिटी क्या है, तो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, राइट, दैट प्रेजेंट इन एयर. तो वो जो ड्रॉप्स है वाटर के वो क्या होते हैं, राइज होके कंडेंस होते हैं, ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और एक फीचर बनाते हैं, दैट इज नोन एज, नाउ सी, ड्रॉपलेट्स ज्वाइनिंग टुगेदर फ्रॉम बिगर ड्रॉप्स फॉर्म दी बिगर ड्रॉप. मतलब कि छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं वाटर के, जो
एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो ज्वाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है एंड ह्यूज मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड क्लाउड्स. नाउ प्रेसिपिटेशन. When these droplets become too heavy to float in the air, जब वो clouds जो बन जाते हैं, droplets ज्यादा heavy हो जाते हैं, तो they were falling down on the earth, right? In the form of rain, in the form of snow. So it is known as precipitation. So you can see here, too heavy to float in the air, they come downwards, precipitation. Precipitation is a form of types. Precipitation which comes down to the earth in liquid form is called rain. And in the other forms are snow, sleet and hail. Rainfall is the main source of groundwater which is very important for the vegetation cover in the earth surface. It is also an important source of fresh water. Very tiny drops of rain, very much important, student, pay attention. Very tiny drops of rainwater are called drizzle. The instrument used to measure rainfall is the rain gauge. मतलब कि ये you can see here the picture of rain gauge. रेन को मेजर करने के लिए उन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है? रेन गॉज. Rainfall itself is of three types. Now there are three types of rainfall: convectional rainfall, relief rainfall, or you can say orographic rainfall, and cyclonic rainfall. Now see student, what is convectional rainfall? You can see here the picture of three types of rainfall. This diagram also very much important. Now see, what is convectional rainfall? तो जो water cycle हमने पढ़ा है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो ओशन और सी में जो वाटर होता है वो क्या होता है? एवोपरेट होता है. एवोपरेट होके वो क्या होता है? तो राइज होके क्या कंडेंस करता है? क्लाउड कंडेंस करता है. वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है और उसके बाद क्या होता है? रेनफॉल, राइट. तो इस तरह से जो प्रोसेस है, वाटर साइकिल की जो प्रोसेस है, उसके थ्रू जो भी रेनफॉल होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शनल rainfall. Now you can see here, see, that is only written down. When a column of hot air expands, rises and reaches the upper layer of the atmosphere, condensation of moisture take place. Condensation मतलब कि cloud condense होते हैं, leading to the formation of clouds. These clouds produce sudden and heavy rainfall, and this is called convectional rainfall, and it is a daily feature in equatorial region. Equatorial region में क्यों ये daily feature है? क्योंकि equatorial region में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ज्यादा होगा तो उतना ही एवोपरेशन ज्यादा होगा, और एवोपरेशन ज्यादा होगा तो रेनफॉल भी ज्यादा होगा. Now second one is relief or orographic rainfall. Now student, what is relief and orographic rainfall? So pay attention. The presence of a mountain or a hill in the path of moisture-laden winds force the air mass to ascend along the slope, leading to cooling of rising air. This leads to the condensation and cause rainfall. Now see, you can see in this picture. माउंटेन और हिल्स एरिया जो होते हैं वहां पे ऑलरेडी क्या होता है? हम माउंटेनियस एरिया में जाते हैं या हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है, पर वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां पे फॉग हमें ज्यादा देखने को मिलता है, राइट. तो ऑलरेडी वो टेम्परेचर कूल होता है, उसकी वजह से वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और वो ह्यूमिडिटी के वजह से ही वहां पे क्या हो जाता है? क्लाउड कंडेंस हो जाता है. यू कैन सी द क्लाउड ओवर हियर. मॉइस्ट एयर. क्यों मॉइस्ट एयर लिखा है? क्योंकि ह्यूमिडिटी के वजह से ये क्लाउड कंडेंस हुए, और फिर जो भी रेनफॉल होता है कूल डाउन होने के बाद, इट इज नोन एज रिलीफ और ऑरोग्राफिक रेनफॉल. नाउ सी, the windward side of the mountain receives heavier rainfall compared to the leeward side. Windward means अपर एरियाज एंड लीवार्ड मीन्स लोअर एरियाज. तो यहाँ पे अपर एरियाज में, हिल के अपर एरियाज जो होते हैं वहां पे रेनफॉल ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और जो लोअर एरियाज होते हैं वहां पे रेनफॉल कम एक्सपीरियंस होता है. नाउ लास्ट वन इज साइक्लोनिक एयर रेनफॉल. व्हाट इज साइक्लोनिक रेनफॉल? व्हेन अ वार्म एयर मास एंड अ कोल्ड एयर मास मीट, मतलब कि जब माउंटेन एरियाज और वाटर साइकिल के वजह से जो एवोपरेशन होता है, तो वार्म और कोल्ड एयर जब एक दूसरे को मीट होती है, राइजेस ओवर द कोल्ड एयर mass cools and condense. This cause rainfall along the path. This is called cyclonic
एयर, मतलब कि जब वार्म एयर राइज होती है और उसी टाइम पे अगर कोल्ड एयर भी वहां पे ब्लो हो रही है, तो दोनों एयर मिक्स होके जो भी कंडेंशन करता है क्लाउड का, और उसके वजह से जो रेनफॉल होता है, दैट इज नोन एज साइक्लोनिक. It is generally associated with cyclones. Rainfall is extremely important for the existence of life on Earth. It is not only a source of fresh water but also influences or determines the vegetation of any area. मतलब कि rainfall बहुत ही important है for not only for sources of water के लिए ही नहीं, पर vegetation के लिए भी वो बहुत important है. Now we are going to learn about pollution of the air. See, pollution of the air. Any change in the composition of air is termed as air pollution. मतलब कि air में अगर कोई भी changes आते हैं, उसकी purification में कोई भी changes आते हैं, तो that is known as air pollution. It results from the release of certain gaseous, solid or liquid agents in the atmosphere. The obvious cause of air pollutions are, main causes कौन से हैं air pollution के? Growing industrial activity, इंडस्ट्री का जो स्मोक होता है वो रिलीज करते हैं, उसकी वजह से. एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, राइजिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि व्हीकल्स जो बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ. फायर्स एंड बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. द चीफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर, और ये सारी चीजों की वजह से जो क्या एयर में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, chlorofluorocarbons, suspended particulate matter, and sulfur dioxide, nitrogen oxide, and lead. And all these gaseous matters are very dangerous for human being and for even all the natural things that were living on the earth. Air pollution leads to serious health problems, loss of biodiversity, and damage to historical monuments. It is a severe threat to the environment and must be tackled urgently.